economy. Sorry, and these are just some examples of some of the companies that have their offices right here in Manitoba. So a lot of industry here, including financial, technology, business, all of those areas. As I mentioned, Manitoba has the advantage of having an affordable cost of living because we are in the center of Canada and we have resources to our west and to our east. We're able to keep that cost of living down. So for example, the average rent for a 2-bedroom apartment in Winnipeg is approximately $1,600, whereas in Vancouver, for example, it would be double that, so almost $3,500, and in Toronto, approximately the same. So for the same apartment. So again, just an example of how our cost of living, it makes it an affordable option for students. On average, our tuition is lower as well in the province. So for example, for the exact same undergraduate bachelor's degree, a student will pay approximately $18,000 per year for international students, whereas in Toronto, in Ontario, on average, they pay about $45,000 per year. So again, one of the lower provinces for tuition rates, and it's for the exact same education. We also have in Manitoba the Provincial Nominee Program, which offers priority assessment for international students with strong ties to Manitoba who have interest in immigrating to Canada. So for example, if you graduate from the University of Winnipeg, you would have a 99% approval rate for obtaining your postgraduate work permit, and then eventually your permanent residency to Canada, if you were interested in becoming a Canadian citizen. So we do that through career employment pathways. So students who graduate from the university who find long-term employment in Manitoba, and then also within one of the in-demand occupation lists, so such as computer programming, psychologists, medical lab techs. There are in-demand occupations in every sort of industry. So the University of Winnipeg is located in the heart of downtown, which is great, especially for international students who maybe don't have a car to get around. Because we are downtown, it is easy to get around by the Winnipeg Transit bus. And also being downtown, you are just a quick walk away from a lot of places where you can find employment, businesses, shops, restaurants, all of these things downtown. Excuse me, right by the University of Winnipeg. And so students are able to have a wonderful employment opportunity as well as socialization. So also in Winnipeg, we experience all 4 seasons. So we experience fall, winter, which I think a lot of international students from warm climates can be a little bit afraid of winter, but truly we have a lot of outdoor activities in the winter, such as skiing, skating, walking on the frozen river. And when you are dressed with a nice warm coat and nice boots, winter is actually quite a lovely time to experience as well. We also have a beautiful spring and summer season in which you can experience being outdoors in all our parks. A lot of sports happen, such as soccer and cricket, right here within our provincial and national parks in Winnipeg. So the University of Winnipeg itself is approximately 10,000 full-time students with about 1,600 international students
from more than 90 countries. So certainly a lot of opportunity to meet people from your hometown, but also from all over the world. We have unique research opportunities for undergraduate students, 55 plus student groups, so definitely groups that you can join out of interest, and also international student services, which offers support for immigration, academic advising, and social and cultural activities. As mentioned, I will be speaking mostly about our undergraduate studies. However, we also offer an English language program, the collegiate, which is the high school attached to the university, professional applied and continuing education, known as PACE, for postgraduate education, as well as graduate studies offering master's degrees in a select area. So as I mentioned, undergraduate studies, we offer 3- and 4-year bachelor degrees. The difference really is that a 3-year degree is a general study of that field. For example, a general degree in science, in chemistry, for example, whereas a 4-year degree allows you additional time to focus in a certain area. So for example, if you have earn your bachelor's degree in business, then in that 4th year, you can do a concentration such as specifically accounting business or human resources within business. So you do a little bit of like a specialization. And also if you wanted to pursue further study, such as a master's degree, often they look for students with a 4-year bachelor's degree. But you can do 3- or 4-year degrees at the University of Winnipeg, and they are fully recognized, globally accredited wherever you go in the world. One of the main reasons I find the University of Winnipeg to be a great option for students, and it was for myself as a student, is we have a small student-professor ratio. So approximately, on average, 25 students to 1 professor, which is really wonderful. In a small class size setting, you can ask all the questions you have, get the help that you need, and that's very important to succeed. All our programs begin in January, May, or September, so there are 3 intake opportunities, and letters of acceptance are valid typically for 2 intakes. We also offer co-op programs and work integrated learning. So that means you get some hands-on real life experience as you study. We offer the Faculty of Arts with a Bachelor of Arts degree in 26 different programs, including criminal justice, psychology, theater and film, history, communications, and political science. Taking a variety of arts courses is a great way to add to your knowledge base and skill set. So even if you are a business student, you can still take some arts courses as well to give yourself a fully diverse and really good, strong degree. For example, a business student with some psychology courses really helps you in your business understand the different communities that you may be working with within your business. So that's just one example of how taking an arts course within your other degree can be beneficial. As mentioned, we have our Faculty of Business and Economics with specializations in accounting, human resource management, marketing, international business, a new supply chain management stream, as well as co-op enterprises. So certainly post-COVID, that supply chain management has become a very important topic. And so we have developed a stream to allow students to graduate with a specialization in that. We also offer majors in economics and finance. And of course, with this faculty, we have co-op and internship opportunities. So a great way, especially as an international student, to get some hands-on experience within the field of business, but also start building some connections and networking so that when you do graduate,
you already have people within the industry that you know, and you've built those strong ties. We also have the Gupta Faculty of Kinesiology and Applied Health. So this is a wonderful faculty for those interested in physical fitness, sports, and anything related to the body and movement. So this is also excellent preparation for anyone interested in any further studies within the health field. We have a 4-year kinesiology degree in this faculty, as well as a degree in athletic therapy. We also offer the Faculty of Science, so majors such as biology, chemistry, data science, mathematics, applied computer science, physics, environmental science, and many more. The nice thing about our Faculty of Science as well is that we host first-year science labs of only 24 students on average. So again, smaller sizes within the classroom so that you get a lot of that one-on-one attention that's required. And we also offer state-of-the-art labs with our modern science complex with state-of-the-art equipment and learning areas. So you're really learning with the best materials in the best setting. So what do you need to study at the University of Winnipeg as a student from Pakistan? So secondary school credentials are that you must have a higher secondary school certificate with a secondary school grade of B, with special consideration on specific academic subjects. The university or college transfer grade. So if you do have some university or college studies already, we would look at the accreditation of that schooling that you have taken, as well as the grading scale that they have. So depending on how the institution will grade, typically we look for an equivalency of a B or B plus average within your schooling to be able to transfer over. We do require an English proficiency test as well, or you could absolutely apply for admission to the University of Winnipeg for undergraduate studies, and at the same time apply for our English language program, which would allow you to start your undergraduate studies once you have successfully completed the English language program. So that is an option for students who would like some opportunities to develop their English language. But if you feel very confident in that and would like to just provide a test, you can do that as well. Other curriculum requirements. So if you have IB or you are taking the A levels or O levels, these are the curriculum requirements for that. So for IB diploma with 3 higher level courses and 3 standard level courses, no grade below a 4. The British pattern, so we would expect 2 subjects at advanced level and 3 at O level, or 3 at A level and 1 at O level, with a minimum C, no mark below a D. Regarding the English language requirement, as mentioned, we have our English language program. However, these tests are also accepted. The TOEFL with a minimum of 86, IELTS with a minimum overall band score of 6.5. We also accept Duolingo, which is the online course, online test rather, with a minimum score of 120, and Pearson minimum 58. Applying is easy. You can apply online at uwinnipeg.ca, pay the application fee of 120 Canadian dollars, and then submit all of your required documents. So these documents, some examples would be transcripts, language tests, passport, all of those types of things. Now, if you have certain transcripts, such as from post-secondary studies, those transcripts would typically have to come directly from the institution. However, if you work with our agent, Education Concern, they can help you figure out all of your documents
and they're a wonderful resource for helping you figure out all of that whole process for applying, as well as for applying for your study permit. As mentioned, we do accept students who are transferring from current post-secondary studies up to 60 credit hours, which is approximately equivalent to 2 years of study, as long as your post-secondary institution is accredited and the course content is similar to what we offer. Please note that transfer credits are assessed after you have successfully completed your application. And so we do not do a prior assessment of your transfer credits. Moving on to tuition fees. The application fee, as mentioned, is $120 Canadian. Tuition for approximately 1 full year of study, depending on your faculty of interest, is anywhere from about $15,000 to $20,000. General books and fees, approximately $2,200, and then your health insurance. So in total, for 1 year of full-time study, depending on your faculty of interest, you would be paying approximately $19,000 to $23,750 Canadian for 1 year. So for example, the Faculty of Arts in Psychology would be approximately $19,000. Faculty of Science and Business would be approximately $23,000 per year. Also, if you are interested in living on campus, it is not mandatory, but it is a convenient and more affordable option for students. I find that a lot of our international students especially will live on campus for their first year, and then they meet other friends, and then maybe they move on to live elsewhere in the city, but they start, at least for their first year or two, with living on campus. We have our McFeeters Hall with furnished room and a meal plan for $10,000. And then our Balmoral houses, again, your own furnished room for approximately $5,000. But the second one does not come with a meal plan. So this is how the McFeeters Hall looks. It is right next to our science complex. It's dorm style housing, so you get your own bedroom with a desk, a bed, a bathroom, so you have your own bathroom. Or we have the double furnished rooms, which means you have your own bedroom with a desk, but then you share your bathroom with one other student. And so you would have like a little tiny living space that you share, but you still get your own bedroom. There is a meal plan included in this that also extends to different dietary restrictions. So if you have a dietary restriction as a vegetarian, vegan, halal, whatever it is that you need, they will accommodate for that. These are our Balmoral houses. Again, it includes your own private bedroom with air conditioning, but then you have shared common spaces. So you would share a kitchen, bathroom, living room area with 3 or 4 other students, depending on the home. And this, again, both options are within a 2 to 5 minute walk of campus. So you would need to apply for housing over and above applying for admission. So if you are interested in applying to live on campus in either the McFeeters or Balmoral houses, you would need to submit an application for that with an application fee and a deposit to guarantee your room. We also have scholarships and awards. The President's Scholarship for World Leaders is a one-time $5,000 Canadian scholarship. We also have scholarships for those students with IB or AP classes as well. And then we have a special entrance scholarship for students who are starting at the University of Winnipeg straight out of high school. So you graduate from high school in Pakistan and then you join the University of Winnipeg right after. You can earn up to $3,000 worth of scholarship automatically given to you if you have an 85% average or above.
Again, just some more AP and IB transfer credit scholarship information. So depending on your score within those AP or IB grades, you can earn scholarships as well. If you need to meet the English language requirement, as I mentioned, our full-time 14-week English language program. We also have pre-university pathway program for students who are already high achieving students in high school, but you wish to complete your last year of high school at the University of Winnipeg. You would need to demonstrate a solid study plan. So show that you are interested in completing high school at the University of Winnipeg Collegiate, and then you know exactly the program that you would like to study in undergraduate studies afterwards. This allows students to earn some dual credit courses and connect with with other high achieving students. And also that would mean that you would earn a local Manitoba curriculum. For PACE, we offer some postgraduate programs. So if you already have a bachelor's degree and you have some work experience, you may be eligible for one of these programs as well, such as Advanced Business Management. It's a one-year program, and artificial intelligence is another very popular area. But just keep in mind that these programs are very competitive to get into, and so they really do look for students that have a bachelor's degree and have relevant work experience in the field already, and you're just looking to advance your knowledge and advance your skills in that area. So these are just some other programs, again, such as project management, supply chain management, and web development at a postgraduate level. Again, with PACE programs, they do require a bachelor's degree, work experience, as well as an English language requirement. And you can find further details on PACE programs by going to our website, uwinnipeg.ca. And just in the search engine, you can put PACE International, and it will bring up all the programs available to you, as well as their admission requirements. Graduate programs. So this is for students who have a bachelor's degree and are interested in getting a master's degree. So those would be areas such as applied economics, criminal justice, cultural studies, Indigenous governance, and then in our science, master's degrees in applied computer science, bioscience, technology, and public policy, and a lot of other areas as well. If you would like further information on graduate programs, please contact our graduate studies department at gradstudies@uwinnipeg.ca, or you can visit their website on our website, uwinnipeg.ca, and in the search engine, you can just put graduate studies, and all of the information will come up there. For all our international students, we offer airport pickup, academic and career advising, a mentorship program, personal counseling, free tutoring, social and cultural activities, immigration advising, as well as a private international student lounge. So definitely a lot of services to help you as an international student feel comfortable, know that you have the services there to help you. So once you arrive, we don't just leave you empty-handed. We offer you as much support as possible to make sure that you succeed. So then the next steps to applying, I will leave for Mr. Farouk, in capable hands of Mr. Farouk to help guide you and answer any of your questions. And I'm here as well. So thank you so much for listening. And thank you again, Mr. Farouk, for your invitation. Thank you very much for giving these information in a very simple way, which is very easy to understand. So dear students, I'm here to give you information about how to apply visa. And Pakistani students come under SDS policy, Student Direct Stream. Under this policy,
you will need to fulfill 3 basic requirements. And if you fulfill these 3 basic requirements, you can get your visa without any interview and without parents' bank statement. So number 1, in any case, you must have IELTS with 6.5 band and no less than 6 in any single module. So only IELTS is acceptable, no Duolingo, no TOEFL, no PT, only IELTS if you want to apply under STS policy. So number 2, you will deposit first year tuition fees in advance to the university. Number 3, you will open your account in a Canadian bank and deposit 10,000 Canadian dollar for your living cost, खाने पीने रहने के लिए. अगर आप ये 3 कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं, सो आप विदाउट पेरेंट्स बैंक स्टेटमेंट के और विदाउट इंटरव्यू 21 डेज में वीजा ले लेते हैं. सो आपको मजीद मैं सिंपल वर्ड में बताता हूं जिससे आपको समझना आसान हो जाएगा. पाकिस्तानी स्टूडेंट्स SDS पॉलिसी में आते हैं, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, जो 2019 में पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया. इस वजह से वीजा रेशो बहुत हाई हो चुकी है और स्टूडेंट्स आर गेटिंग वीजा विद इन 21 डेज, इवन सम टाइम इन 6 डेज. सो आपको 3 रिक्वायरमेंट पूरी करनी है सिर्फ. चाहे आपका बैकग्राउंड O लेवल A लेवल है, चाहे आपने अमेरिकन एजुकेशन ली है पाकिस्तान से, आपने हर सूरत में आइल्स करना है 6.5 बैंड के साथ और किसी मॉड्यूल में 6 से कम ना हो. इस SDS पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ आइल्स चाहिए, नो डिलिंगो, नो टोफल, नो PT और कोई भी और टेस्ट नहीं चलेगा. नंबर 2, आपने फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस सिर्फ एडवांस पे करनी है यूनिवर्सिटी को. नंबर 3, आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा कैनेडियन बैंक में ऑनलाइन, विच इज वेरी इजी. हम आपको उसमें पूरा गाइड करेंगे और उसमें आपने 10,000 कैनेडियन डॉलर खाने पीने रहने के लिए जमा कराने हैं. ये 10,000 आपका एक्सपेंस बज़ाहिर नहीं है, ये आपके बैंक में ही पड़े हुए हैं. उधर जाके पार्ट टाइम जॉब आप करते हैं तो खाना पीना रहना वहां से आराम से निकल आता है. तो सम टाइम ये 10,000 महफूज ही रहते हैं, आप इसको नेक्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस में यूज कर सकते हैं. ड्यूरिंग स्टडी आपको पार्ट टाइम जॉब अलाउ है. ड्यूरिंग विंटर समर वेकेशन फुल टाइम जॉब कर सकते हैं. और अच्छी बात यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग बहुत से ऐसे प्रोग्राम ऑफर करती है जिसमें 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर को आपके हैं, जिसका मतलब ये है कि आपने वो सेमेस्टर पढ़ने की बजाय जॉब करनी है और उसमें आपको अर्निंग भी होगी. और आफ्टर स्टडी आपको वर्क परमिट मिलेगा और उसके बाद PR मिल जाएगा. और मैनिटोबा प्रोविंस में PR बहुत फास्ट है, विद इन 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ आपको PR मिल जाती है. तो मैंने आपको तो इंफॉर्मेशन काफ़ी सादा तरीके से दी है ताकि आप इजीली समझ सकें. आपका इस सिलसिले में कोई भी क्वेश्चन हो, यू आर फ्री टू आस्क इवन इन उर्दू और इंग्लिश. और हाँ, आपने अगर आइल्स करना है तो आप किसी भी इदारे से कर सकते हैं. हमने आइल्स को ऑनलाइन आइल्स की क्लासेस शुरू की हुई हैं. अगर आप कोई भी उसको ज्वाइन करना चाहे तो 7:30 के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं. आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी and send me your documents by email or WhatsApp, or you can talk to me on WhatsApp to discuss your case. So now we are open to receive any question. आप अपना अनम्यूट करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं और चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. Yes, hi Gina, this is all about from my side. Hello. Yes. I wanted to ask, like, if we wanted to transfer from the UK to Canada, it's like I'm done with my first year of studies here in the UK, and I want to transfer my credits from here to Canada, University of Winnipeg. So, what's the procedure about that? Like, do we come into the STS scheme or not? Hello. Yes, Muhammad Abdullah. Yes, you can get admission as a transfer student for STS. And if you apply your visa from UK, then you cannot come under STS policy. But still, you have very good chance to get visa from London. The thing is, like, I'm still an international student from Pakistan. Yes, yes. इसका मतलब है you have to come back to Pakistan to apply visa. इधर से नहीं हो सकता?
For this, you should contact to Canada House in London. This is located in Trafalgar Square. तो उधर आप उनसे कांटेक्ट कर लें और उनसे embassy? पूछें कि क्या मैं वहां से अप्लाई कर सकता हूं या आई हैव टू गो बैक टू माय कंट्री। अच्छा, तो उसके मैं फिर एसडीएस प्रोग्राम के अंडर नहीं आता फिर। आप मुझे SDS मतलब कि जी हाँ, आप एसडीएस में नहीं आते, लेकिन स्टिल ड्यू टू योर प्रेजेंस इन यूके आपके वीजा के चांसेस अच्छे हैं। प्रेजेंस इन यूके कम अभी है ना, तो मतलब जब कनाडा के लिए अप्लाई करना है तो उसका पाकिस्तान जाना पड़ेगा? जरूरी नहीं है, आप सिर्फ पहले कैनेडियन जो कनाडा हाउस है ट्रफलगर स्क्वायर लंदन में, उनको फोन जी करके पूछ लें कि मैं यहाँ पे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट मौजूद हूँ, क्या जी मैं यहीं से अप्लाई कर सकता हूँ। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको पाकिस्तान नहीं आना पड़ेगा, आप उधर से ही अप्लाई करें। अच्छा, तो उसका ये था कि अगर हमने अप्लाई करना है तो मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट वाले सेक्शन में फॉल करूंगा या ट्रांसफर इंटरनेशनल स्टूडेंट? इंटरनेशनल में दोनों कैटेगरीज आती हैं, ट्रांसफर भी और फ्रेश भी। ठीक है, ट्रांसफर आइदर फ्रॉम द यूके और पाकिस्तान? यस बिल्कुल बिल्कुल, आप कंसीडर किए जाएंगे पाकिस्तानी स्टूडेंट। ठीक है, जी बेशक आप इस वक्त यूके में पढ़ रहे हैं लेकिन हैं तो पाकिस्तानी और इंटरनेशनल है। ठीक है, तो जी इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे और आप फ्रेश स्टूडेंट के तौर पे भी अप्लाई कर सकते हैं और ट्रांसफर के तौर पे, लेकिन आपने एज ए ट्रांसफर करना है। ठीक है हाँ जी, वो ट्रांसफर ही करना है। जी, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस है? नो। अच्छा ठीक है, मैं चैट बॉक्स में देता हूँ, आप सबके जी लिए आप उसको नोट कर लें, ताकि कोई चीज फिर भी आपको कंफ्यूजन दे तो आप मुझे इसके बाद रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव सम कंसर्न। जी सर, मैंने इस्लामाबाद से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, कॉमसेट से ना, इधर की आईटी के लिए फेमस है यूनिवर्सिटी। तो मेरा ओके जीपीए आया है 2.76, जो मेरे ख्याल से 70% से वो ऊपर ही है, 70 से 74% के बीच में आता है ना। ठीक है तो मैं अभी ये पूछना था कि मैंने एमएस के लिए अप्लाई करना था डिजिटल मार्केटिंग में, ओके, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? आपका यस, इनकी जो रिक्वायरमेंट है कनाडा में मास्टर डिग्री की, वो 3 CGPA है या 70%। ओके, और ठीक है आप 70 और आपके मुताबिक आप 70% आ चुके हैं, ऐसे ही है ना? जी जी, 70 से ज्यादा है। जी ठीक है, यू आर एलिजिबल। ओके, थैंक यू ठीक है, सो मच। एंड और अगर फाइल्स, ठीक है फर्ज करें क्योंकि यूनिवर्सिटीज आपका 3 CGPA को देख रही होती हैं, तो फर्ज करें आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देती, तो ठीक है आपने फिर सेकंड आपकी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग में पेस प्रोग्राम है, प्रोफेशनल डिप्लोमास है जिनका वीजा रेशो बहुत हाई है, और वो ठीक है। डिजाइन ही उन कैंडिडेट्स के लिए किया गए हैं डिप्लोमे जो अपनी एजुकेशन मुकम्मल करके प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके हैं, जैसे कि आप हैं, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं या किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये इससे कितने साल का है? ये अमूमन ये 1 ईयर का होता है, आप 1 ईयर का मुकम्मल करें, उसके बाद वर्क परमिट लें और PR लें। अच्छा, पीआर इसके थ्रू भी मिल सकती है, प्रोफेशनल यस डिप्लोमा? यस, विनिपेग जिस प्रोविंस में मौजूद है वहां पे आफ्टर स्टडी 6 मंथ के बाद PR मिलता है। सो और PR में ये क्विक है। ठीक है, और इसकी क्या एक्सपेंस है? इसके सेम है एमएस की तरह या ज्यादा है, कम है इसका? कम है। आप अपनी डिग्री जरा दोबारा बताएंगे, किस फील्ड में की आपने? मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, अब मैं चाह रहा हूँ कि एमएस डिजिटल मार्केटिंग में हो ना। ओके, मैं इनकी ट्यूशन फीस देख लेता हूँ, आपको पेस प्रोग्राम का मैं लिंक भेजता हूँ, इसमें फुल टाइम प्रोग्राम में अपना प्रोग्राम चेक कर लें। ठीक है, ठीक है सर। और आइल्स कितना चाहिए होगा पोस्ट प्रोफेशनल डिप्लोमा के यस लिए? यस, ये तमाम और भी ये बहुत अच्छा इन्होंने क्वेश्चन किया है आइल्स का। जी जो भी स्टूडेंट्स कनाडा पढ़ने जाएगा, चाहे वो डिप्लोमा में जा रहा है, चाहे बैचलर डिग्री, चाहे मास्टर डिग्री, 6.5 बैंड या 6 ओवरऑल, और किसी भी मॉड्यूल में 6 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया सर, ठीक थैंक यू सो तो मच। सर ये मैंने चैट बॉक्स में अपनी इंफॉर्मेशन लिख दी है। मैं ठीक है, देखता और ये मैं पेस प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन भी भेज रहा हूँ। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर खादिम अली हियर।
सर मेरा क्वेश्चन है कि आपकी यूनिवर्सिटी विनिपेग में नॉन एसडीएस का सर कोई सिनेरियो है? देख, यस, कनाडा की हर यूनिवर्सिटी में नॉन एसडीएस एसडीएस दोनों अवेलेबल है। दिस इज टोटली अप टू यू कि आप एसडीएस से फायदा उठाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि नॉन एसडीएस में वीजा रिफ्यूजल बहुत ज्यादा है। और नॉन एसडीएस में जब अप्लाई करते हैं तो सम टाइम वीजा ऑफिसर ये अज्यूम करता है कि इसने एसडीएस पॉलिसी जो इसके कंट्री के लिए अवेलेबल थी उसको बाईपास किया है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि इसको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, ये स्टडी अफोर्ड नहीं कर सकता, तभी इसने ट्यूशन फीस फुल पे नहीं की। ये स्टडी अफोर्ड नहीं कर सकता, तभी इसने बैंक में $10,000 नहीं डिपॉजिट कराए। तो आपका केस वीक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं कि वो जरूर ऐसा सोचें, लेकिन इसके चांसेस हैं। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि नॉन एसडीएस को इग्नोर करें और एसडीएस में अप्लाई करें, ताकि आपको वीजा इजीली मिल जाए। ठीक है। और दूसरा सर ये कि मेरी ना इधर एमएससी ज़ूलॉजी है, तो सर उधर मुझे डिप्लोमा में जाना चाहिए या डिग्री में जाना चाहिए या एमएस में जाना चाहिए? आपको मास्टर डिग्री में पहला आपके सीजीपीए कितना है? सर 3.2। आप पहले चेक करें, हो सकता है मास्टर डिग्री में आपको आप चूंकि आपका सीजीपीए अच्छा है तो मास्टर डिग्री में ले लें। अगर नहीं अवेलेबल प्रोग्राम या एडमिशन नहीं मिलता तो फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या पेस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। पेस प्रोग्राम का लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया, आप उसको चेक कर लें। ठीक है सर अस्सलाम वालेकुम। तो सर उसका वीजा रेशो डाउन नहीं हो जाएगी? नहीं, वीजा रेशो पेस प्रोग्राम की या मास्टर डिग्री की या पोस्ट डिप्लोमा की बहुत अच्छी है, अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत अच्छा लिखा हो। स्टडी जिसे स्टडी प्लान कहते हैं, ये आपकी एप्लीकेशन की बैकबोन है। इसमें आपने जस्टिफाई करना है कि ये प्रोग्राम क्यों आपके लिए जरूरी है। इसको करने के बाद इसमें आपने क्या क्या पढ़ना है, इस यूनिवर्सिटी को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या आप इसमें पढ़ेंगे, आप जब अपने मुल्क वापस आएंगे तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होंगी, आपका फ्यूचर क्या है। और जब आप अपने मुल्क के मुताले लिखें तो वहां पे कंपनीज के नाम, उनकी वेबसाइट्स भी लिख दें कि मैं इन कंपनियों में फलां पोस्ट में लग सकता हूं। तो इस किस्म की मीनिंगफुल अच्छी एसओपी लिखेंगे तो वीजा के अच्छे चांसेस हैं। सर कितना रिक्वायर होना चाहिए सर हमें उधर डिप्लोमा या डिग्री करने के लिए आफ्टर मास्टर? प्लीज दोबारा क्वेश्चन करें। सर अगर हम एसटीएस में जाते हैं तो सर बजट कितना रिक्वायर होना चाहिए? बजट एसडीएस आपकी 10,000 तो आपने जमा कराने हैं बैंक में, तकरीबन 18 लाख वो बन गए। और तकरीबन जो इनकी ट्यूशन फीस है पेस प्रोग्राम की वो 14,000 से मोस्टली 14,000 12,000 के करीब है। कुछ 2-3 प्रोग्राम है जिनकी 20,000 के करीब है। तो इतना ये बहुत ही इकोनॉमिकल ट्यूशन फीस वाली यूनिवर्सिटी है, ये महंगी नहीं है और इसकी वीजा रेशो भी अच्छी है। जी कयूम, आप क्वेश्चन कर रहे थे? जी सर, मैं पूछ रहा था कि बैचलर डिग्रीज वगैरह और इनके लिए क्या प्रोसेस है, मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स और बजट वगैरह। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं अभी इंटर लेवल में हूँ, इंटरमीडिएट में। जी हाँ जी, तकरीबन $14,000 कैनेडियन डॉलर ट्यूशन फीस है और 10,000 जो आपने बैंक में डिपॉजिट करना है अपने ही अकाउंट में। सो 24,000 टोटल। जी दोबारा बोले प्लीज। इनके रिक्वायरमेंट्स वगैरह मतलब क्या प्रोसेस है अगर जी रिक्वायरमेंट, हाँ जी, कनाडा में एडमिशन के लिए यू मस्ट हैव आइल्स विद 6.5 और 6 ओवरऑल और किसी मॉड्यूल में 6 से कम नहीं होना चाहिए। जब एडमिशन हो जाएगा फिर आपने 1 ईयर की ट्यूशन फीस एडवांस पे करनी है यूनिवर्सिटी को। फिर आपने कैनेडियन बैंक में अकाउंट ओपन करना है, उसमें $10,000 कैनेडियन डॉलर जमा कराने और फिर वीजा अप्लाई करना है। और वीजा विदाउट इंटरव्यू 21 डेज या 1 मंथ में मिल जाता है। थैंक यू। जब आप इंटरमीडिएट के एग्जाम से फ्री हो जाएं तो आइल स्टार्ट कर लें। चैट बॉक्स में मैंने अपनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, मुझसे राब्ते में रहें, स्पेशली जब आप आइल स्टार्ट करना चाहें। और पहले भी मैंने कहा है, किसी ने अगर आइल्स करना हो और हमारी आइल्स की ऑनलाइन क्लासेस लेनी है जो 7:30 पे डेली होती है, वो ले सकते हैं। वी हैव वंडरफुल टीचर, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो ये है सारा प्रोसीजर। जी सैयदा हिना, आपका क्वेश्चन? सर स्टेटमेंट
खादिम अली, अभी आपको मैं आंसर देता हूँ, एक मैं क्वेश्चन ले लूँ। जी सईदा। I am married and I have a daughter as well. I have completed masters in HR. So I'm thinking of applying for a university in Canada. So I've done masters in HRM. Is there a course in this university? Like after masters, what I can actually do? And can I bring my family along with me? Very good question. They have PACE as you already have done master, so you can get admission in professional diploma, which is PACE program. मैंने link वो दे दिया है. So please tell me about your the baby, the age of your baby. How She's old 1 year she? old. Okay. So in this case, you should apply with your baby and husband. And Yes. in the study plan, you should mention that during my study, my husband will take care my baby. ठीक है, ताकि आप उनको जस्टिफिकेशन हो जाए कि हस्बैंड साथ क्यों जा रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकती हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको वीजा रेशो बताता हूँ उन कैंडिडेट्स की जो मैरिड हैं और बच्चों वाले हैं। उनकी वीजा रेशो इतनी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू दोस्त जो सिंगल हैं और अभी उन्होंने इंटरमीडिएट फ्रेश पास किया है या बैचलर डिग्री फ्रेश पास की है। तो मैं आपके बारे में सिर्फ यही कहूंगा कि आप अप्लाई करें, मैं आपको डिस्करेज नहीं करूंगा, लेकिन वीजा रेशो इतनी अच्छी नहीं है, आपको कोई दूसरा मुल्क भी ज़हन में रखना चाहिए। ठीक है, Achha. लाइक And if यूके। my husband's profile is also good, like 10 years की work experience है, तो ओके, इसमें कुछ help मिल सकता है? अगेन उनके लिए भी सेम यही मैं कहूंगा। हाँ, इसमें वो अप्लाई करें और अकेले अप्लाई करें एज ए सिंगल, यानी कि अकेले, सिंगल मीन अकेले अप्लाई करें। अपना स्टेटस बेशक यकीनन अपना स्टेटस वो वही रखें कि वो शादीशुदा हैं। जब उनका वीजा लग जाए वो पढ़ने के लिए चले जाएं, फिर आप और आपका जो बेबी है वो उनको एज ए डिपेंडेंट ज्वाइन करेंगी और वीजा अप्लाई करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके तो से उनकी ज्यादा चांसेस मेरे हस्बैंड को होंगे? इसके मुतालिक मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैरिड लोगों के वीजा चांसेस इतने अच्छे नहीं हैं। ओके, ठीक है, आपको बी प्लान में यूके को भी रखना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू राइट सो मच। जी, मोस्ट वेलकम जी। एनी अदर क्वेश्चन? खादिम अली, आपका क्वेश्चन बताएं। सर एसडीएस में अगर हम करते हैं तो सर हम 10,000 कनेडियन डॉलर उधर डिपॉजिट करवा देते हैं, तो उसके बाद जी। सर स्टेटमेंट की सर नीड होती है हमें? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। आपने लगता है लेट ज्वाइन किया है, नहीं तो मैं शुरू में किया था। एसडीएस पॉलिसी को मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। आप 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा। जी, मैं एसडीएस पॉलिसी को थोड़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो बच्चे, खादिम अली तो शायद नहीं है, वो क्वेश्चन कर रहा है, दूसरों को फायदा हो जाएगा, तो मैं कुछ चीजें खुद बता देता हूँ। एसडीएस पॉलिसी में 3 कंडीशन आपने फुलफिल करनी है लाजमी तौर पे। नंबर 1, आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो, कोई भी एजुकेशन हो, चाहे आपने ओ लेवल, ए लेवल के बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप अमेरिकन एजुकेशन से हैं, आपने आइल्स जरूर करना है और आइल्स में 6.5 मैन ओवरऑल या 6, और किसी भी मॉड्यूल में 6 से कम नहीं होना चाहिए। नंबर 2, आपने फुल ईयर ट्यूशन फीस एडवांस पे करनी है। इसमें इंस्टॉलमेंट की सहूलत नहीं है पहले साल में। नंबर 3, विच इज द लास्ट, आपने 10,000 कैनेडियन डॉलर फॉर लिविंग कास्ट कैनेडियन बैंक में जमा कराना है। ये भी सिर्फ पहले साल के लिए करना है, नेक्स्ट ईयर्स के लिए इसकी जरूरत नहीं होती। तो ये 3 कंडीशन आपने फुलफिल करनी है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ ले। सर इसमें अगर सर पियर्सन हो 6 ईच बैंड और टोटल भी 6, तो सर चल सकता है एसडीएस में? नहीं दिया, सिर्फ ओनली आइल्स, जैसे मैंने कहा, सिर्फ और सिर्फ आइल्स, कोई दूसरा
वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके ओके, थैंक यू सर। जी, कोई और क्वेश्चन? मेरे ख्याल में सबके क्वेश्चन कवर हो गए हैं, लेकिन फिर कोई चैट में लिखना चाहे तो चैट में लिख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फाइल्स, ये क्वेश्चन है अब्दुल अव्वल का, कैन वी गेट स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ आइल्स? आइल्स वैसे ही जरूरी है, वो आपने करना ही करना है 6.5 बैंड के साथ, ताकि एडमिशन मिल सके। ठीक है, अमूमन स्कॉलरशिप एकेडमिक बेस होती है, आपके मेरिट के ऊपर, आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, सीजीपी अच्छा है, उसके ऊपर मिलती है। आइल्स का उसके साथ इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं होता। हाँ, समटाइम्स 7 बैंड हासिल कर ले तो कुछ शायद बेहतर हो जाए, अदरवाइज इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। ठीक है, तो आपने 6.5 या 7 अगर लेना चाहें तो अच्छी बात है, हो सकता है आपको कुछ थोड़ी सी स्कॉलरशिप ज्यादा मिल जाए। अदरवाइज उन्होंने आपका ये देखना है कि आप एकेडमिकली आपके ग्रेड्स या सीजीपीए कितना है। जी, और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? I have a question. यस प्लीज। मैंने बैचलर आर्किटेक्चर किया 5 ईयर का, ठीक है, ओके। तो मैं मास्टर के लिए इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, मुझे इसमें एक दो चीजें बताएं। एक तो जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होता है वो भी एक्सेप्टेबल है कि नहीं, आइट जरूरी है? जी, आप बस इसको सिंपली समझ लें कि एसटीएस पॉलिसी में आइल्स मस्ट है। कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर नहीं चलता, कोई डिलिंगो, कोई पीटी, टोफल, कुछ कोई भी और इंग्लिश का टेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, सिर्फ आइल्स चाहिए। ओके, और आइट्स आई थिंक सो 6 बैंड, राइट? 6 या 6.5 ओवरऑल, और किसी भी मॉड्यूल में 6 से कम ना हो। अगर आप ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते, स्टिल आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एसटीएस पॉलिसी आपको नहीं मिलेगी जिसमें वीजा रेशो बहुत हाई है। सो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, अगर आप इजी वीजा चाहते हैं तो आपको एसटीएस में आना चाहिए। ओके, अच्छा। जी, शराज अहमद, आपका कोई क्वेश्चन? गुलाम अली आपका, नादिया नासिर आपका कोई क्वेश्चन? अतीक चौधरी, बीनिश आपका कोई क्वेश्चन? फील फ्री टू आस्क। अच्छा जी, मैंने अपने चैट बॉक्स में दोबारा इंफॉर्मेशन अपनी दे दी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इस इवेंट के बाद 10-15 मिनट्स में कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर कल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं पूछना वालेकुम। चाहती हूँ जी, कि जो स्कॉलरशिप है उसमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स भी इंक्लूड होते हैं या जस्ट हमारी ग्रेजुएशन के, अगर मैंने मास्टर्स में अप्लाई करना है तो? हाँ, फर्स्टली तो आपकी ग्रेजुएशन को देखेंगे कि उसमें क्या आपके सीजीपीए है। ठीक है, उस ठीक है। वो मेन फ्रंट के ऊपर वो है, तो उसी को देखेंगे। मैट्रिक इंटरमीडिएट को आप वो देखेंगे। आपको उस वक्त मैट्रिक इंटरमीडिएट का फायदा दिया जा सकता है जब आपके किसी वैसे सीजीपीए कम हो, तो वो देखें कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट में इसके बहुत अच्छे नंबर थे, इट मीन ये लायक स्टूडेंट है, और किसी खास वजह से सीजीपीए कम आ गए हैं तो आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है एडमिशन का। लेकिन इसमें और सर जी, जी, मेरा जो सीजीपीए है वो है 3.36, तो इस रिलेटेड कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होंगी, क्या आप बता सकते हैं? ओके, मिनिमम जो एडमिशन रिक्वायरमेंट है वो 3 है। ठीक है, जी जी 3.3 के ऊपर 1000, 2000, 3000 या $4000 तक स्कॉलरशिप मिल सकता है। ठीक है, जी कैनेडियन यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी बहुत ही इकोनॉमिकल हैं, सिवाय चंद एक के जो बहुत महंगी है, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, वो 50,000 तक उसकी ट्यूशन फीस चली जाती है। लेकिन बाकी जो मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैं वो काफी इकोनॉमिकल हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि ऑलरेडी हमारी ट्यूशन फीस कम है, तो इसलिए वो स्कॉलरशिप भी कम ही देते हैं। 1000 से 5000 हो जाएगा, तो आपके सीजीपीए में आपकी ट्यूशन फीस आफ्टर स्कॉलरशिप होनी चाहिए तकरीबन 19,000 या 18,000, 18 से 19,000 कैनेडियन डॉलर आपकी ट्यूशन बन जाएगी इस सीजीपीए के साथ। क्या आपको सूट करती है?
जी सर, थैंक यू ओके, सर। ठीक है, मोस्ट वेलकम जी। और आपने आपकी डिग्री किस डिग्री में आपने 3.3 दिया है? सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और आगे मैंने मास्टर्स भी कंप्यूटिंग की ही किसी फील्ड में करना है, वो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं जी। आपके साथ ही है, शायद कांटेक्ट कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, तो कंप्यूटिंग की फील्ड में जो है वो आगे करना है। ओके, और आपको भी मैं यही कहूँगा, अपने हस्बैंड को भी बता दें कि आपने बी जी प्लान में कोई और मुल्क जरूर रखना है, ठीक है, क्योंकि मैरिड जी लोगों के वीजा रेशियो इतनी अच्छी नहीं है कनाडा की, ठीक है। सर, मैंने एज अ सिंगल ही आई थिंक अप्लाई करना है। मैंने ये नहीं कहा आपको कि आप अच्छा, सिंगल करें या डबल करें, मैंने मैरिड का लफ्ज जी इस्तेमाल किया। आप मैरिड होना, ओके ओके जी, वो थोड़ा सा टफ टाइम मिलता है ऐसे केसेस को, लेकिन मुझे ऑलराइट लगता नहीं है, ज्यादा जी घबराना भी नहीं है, ठीक है। मैंने आपको जी डिस्करेज नहीं करा, लेकिन सिर्फ आपको जी जी, कह रहा हूँ कि आपने इसको माइंड में रखना है। ठीक है, प्लान बी होना चाहिए। जी बिल्कुल और बिल्कुल, जी ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम जी। और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, थोड़ा लेट हो गया हूँ, ये ज्वाइन किया मैंने। हेलो ओके, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, दोबारा बोलेंगे? जी, एक्चुअली इधर शायद आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रिसिटी और नेटवर्क का प्रॉब्लम था, तो जी अभी मैंने बिल्कुल, ज्वाइन आज किया। पूरे पाकिस्तान में ही, हमारे लाहौर में भी ऐसा ही रहा। तभी हमारे बहुत से स्टूडेंट्स आज हमें ज्वाइन नहीं कर सके। ये पूरे मुल्क में ही इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकडाउन चल रहा है, कहीं कहीं आना शुरू हो गया, लोग जनरेटर से काम कर रहे हैं। अदरवाइज आज काफी तादाद में स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन करना था, बट वहाँ पे लाइट ही नहीं है। तो अब क्वेश्चन जी आपका जी, क्या है हाँ जी। हुसैन? क्या क्वेश्चन है आपका? हुसैन, हुसैन जी, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन कोई नहीं, बस यही था, इनविटेशन मिला था तो मैंने आपकी लास्ट उसी क्वालिफिकेशन क्या हवाले है से हुसैन? मीटिंग। जी, आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है BSc। और सीजीपीए कितना है? दिस सॉरी, तो आपका सीजीपीए या परसेंटेज कितना है? मार्क्स जी जी, 80%। 80%। आपका 2 इयर्स का है? जी जी ओके, ठीक है, राइट। चलें, आप इस इवेंट के बाद ना, मैंने चैट बॉक्स में अपनी इंफॉर्मेशन मैंने दी है, इनबॉक्स में। आपने इस जी जी, इवेंट के बाद मुझे कॉल कर लेनी है, ओके। ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? बस ये, चले मैं देख लूंगा इनबॉक्स में, ठीक है। आपने दिया तो मैं इन्फॉर्मेशन देख लूंगा। शराज अहमद, आपका कोई क्वेश्चन? ठीक है, मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन सारी आपको सिंपल वे में मिल गई है। सो कीप इन टच, और कोई क्वेश्चन हो तो ईमेल व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता रखें। जिसने एडमिशन लेना हो वो अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे ईमेल कर दे, ठीक है। और किसी ने अगर आइल्स करना है ऑनलाइन जूम के ऊपर, 7:30 के ऊपर उसकी क्लास है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जो फी है, 1.5 मंथ का ये प्रोग्राम है, और फी तकरीबन 22,000 रुपीज है। तो जिसने भी ये ज्वाइन करनी हो आइल्स की क्लासेस, वो मुझे ईमेल या व्हाट्सएप कर दे, मैं उनको टीचर के साथ लिंक अप कर दूंगा, ठीक है। जी सर, ठीक, बिल्कुल। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन आया था माइंड में। जी, वो ये स्कॉलरशिप के हवाले से ईमेल आई हुई है, तो उसके बारे आपका में क्या? आपका परसेंटेज क्या है? 80% है एक्चुअली, जो सीधी बात बताऊं तो काफी टाइम हो गया डिग्री देखी हुए, तो अराउंड 70% से ऊपर ही है। ठीक है, 70% के ऊपर या इस 70%। स्कॉलरशिप अमूमन मिलती है 90% या इससे ज्यादा, या समटाइम 85%। सो आपको, आपकी ट्यूशन फीस होगी तकरीबन 18,000 19,000 कैनेडियन डॉलर होगी। सो हुसैन, आप ऐसा करो, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कल 3:30 के ऊपर फोन कर लो, ठीक है।
जी ओके ओके। ठीक है व्हाट्सएप नंबर आपका एग्जैक्टली? जी, मैंने इनबॉक्स में चैट बॉक्स में लिख दिया है। अभी अकील आपने हमें ज्वाइन किया है, आप जरा अपनी इंफॉर्मेशन दे दें, इसके बाद फिर फिनिश करते हैं इस इवेंट को। वालेकुम सलाम। सर एमएससी मैथमेटिक्स किया और मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ क्योंकि 16 ईयर इक्वल है ना। दोबारा बोले प्लीज। सर मैंने एमएससी मैथमेटिक्स की है एनुअल में, तो वो 16 ईयर एजुकेशन के इक्वलेंट है, तो मैं मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ कनाडा में। ओके, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गुजरात से। ठीक है, आइल्स, चल एक तो आपने आइल्स करना है 6.5 बैंड के साथ, और आप चूंकि आपकी एजुकेशन 16 इयर्स की है, आल्दो कि आपने पाकिस्तान से मास्टर किया है, लेकिन आपकी इक्वलेंसी जो बनती है वो कैनेडियन बैचलर डिग्री बनती है, तो अगेन आप मास्टर डिग्री में जाएंगे जिसकी फीस तकरीबन $23,000 कैनेडियन डॉलर होगी। ठीक है, सितंबर की इनटेक आपको मिलेगी और 10,000 आपने कैनेडियन बैंक में जमा कराने हैं फॉर द लिविंग कास्ट। सो अगर ये आप 3 काम कर लें, आइल्स, 1 ईयर की ट्यूशन फीस पास एंड 10,000 कैनेडियन बैंक में जमा कराना, तो आप इजीली वीजा हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी सर। आप चैट बॉक्स में अपना नाम और अपने नाम के साथ अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दें, मैं इस इवेंट के बाद फिर आपको कॉल कर लूंगा, मोस्ट प्रोबेबली कल इंशाल्लाह आपको करूंगा। ठीक है, तो सर इसके लिए परसेंटेज का कोई मसला नहीं होता, कितने परसेंटेज हैं, क्योंकि एनुअल में किया तो मेरी परसेंटेज कम है। आपकी परसेंटेज कितनी बनती है? 55। हाँ, ये परसेंटेज बहुत कम है। ठीक, आप इसके ऊपर मुश्किल है जी। बीनिश, आपने आपका क्वेश्चन अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने बीएस की है केमिस्ट्री में और मेरा सीजीपीए जो है 3.03 है, तो मुझे कनाडा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो स्कॉलरशिप जो है इस पे कितनी मिलती है? आपकी दोबारा बोले, 3.1 है, कितना कहा आपने? सर 3.03, ऑलमोस्ट 3। आप समझ लें, आपको आप मिनिमम एडमिशन रिक्वायरमेंट, एंट्री रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है, आपको एडमिशन मिलने के अच्छे चांसेस हैं। स्कॉलरशिप का इतना मैं कहूंगा कि आपको थोड़ी बहुत अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो आफ्टर स्कॉलरशिप आपकी फीस तकरीबन 22,000 कैनेडियन डॉलर होगी। तो क्या ये आपके लिए मुनासिब है? सर ये 22,000 कैनेडियन डॉलर पर सेमेस्टर है? पर ईयर, पूरे साल की फी है। ओके, यस सर। ठीक है, ओके, फिर आप अप्लाई कर सकती हैं। एक यूनिवर्सिटी है ब्रॉक यूनिवर्सिटी, उसमें आप इस विनिपेग यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के मुतालिक कोई के रेफरेंस से कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन एक और यूनिवर्सिटी है हमारे पार्टनर यूनिवर्सिटी, ब्रॉक यूनिवर्सिटी, उसमें है, और उनका इवेंट है 25 को 7 PM। आपको मैं आपने वो जरूर अटेंड करना है। आप हमारी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हैं आप हमारे साथ? नो सर, अगर आप बता दें मैं कर लेती। मैंने लिंक भेज दिया है चैट बॉक्स में, इसके जरिए वहां पे चेक कर लें। 25 का इवेंट है, उसको क्लिक कर लें, वो आप जरूर अटेंड करें 25 को 7 o'clock। ठीक है सर, थैंक यू सर। ब्रॉक यूनिवर्सिटी। और मुझे एहतियातन अपने नाम के साथ डायरेक्ट मैसेज कर दें, इधर अपने नाम के साथ अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दें, मैं उसके ऊपर भी आपको लिंक भेज देता हूँ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं। सो 25 को मुलाकात होगी एक और इवेंट में। अगर आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर हैं तो क्लिक कर लें उसको, और वहां पे वो लिंक मौजूद है रजिस्ट्रेशन का। तो 7 o'clock इंशाल्लाह 25 को। ठीक है सर जी। सर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट तो बता दें। ये आपने देख लिया, इसमें नजर आया आपको चैट बॉक्स में? सर फेसबुक अकाउंट और से नीचे जो education.concern है ये आपका? ये मैं दोबारा भेज रहा हूँ सेपरेटली। ये
सॉरी आपको ये एवरीवन मिल गया जी? यस सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। यस, फेसबुक का भी मैंने भेज दिया है। ठीक है जी, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़ सर। ओके, अल्लाह हाफिज।